Today, we will be speaking with Aman Raj, co founder of KaroStartup. He, along with his team, able to build a community of 1 million entrepreneurs. इन्होंने ये वेंचर अपने कॉलेज में 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया था और अब इनकी कम्युनिटी में 1 मिलियन entrepreneurs एंड 10,000 कंपनीज हैं एंड ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप कम्युनिटी हैं. Aman Raj on Hanshika Jain Show. Before we dive into anything else, could you please let our listener about yourself? What do you do? So basically, if I talk about my background, so basically I belong to Bihar. So I've done my graduation from IMS Noida. In college only, I started the startup. Obviously, I joined the team like Abhishek and Madhumita were there, so I joined them, and from there the journey started. Could you please let our listeners what is KaroStartup? KaroStartup helps early stage startup to build their first team, right? So while building the community, we were running community from last 2 years, right? And we were dealing with lot of startup on daily basis. So we figured out that the most common problem that any startup faces is that team building, right? So we thought that this is a major problem that every startup is facing, and we should address that and we should solve that. So KaroStartup helps you to hire great team, passionate people for your startup. So you build a community of 1 million people, right? So how you have built Right. such a large community? So basically, when we started, so it was not never intended to become a company, right? So even when I personally talk about myself, so I'd never heard of any word like startup and other stuff because there were no culture in my background, right? So when I joined college and I met with these people, right? So Abhishek and Madhumita were my seniors, so I decided to join, and they were guys were also looking for some great opportunity, and they were doing events, and also I joined them. I did friendship, and this thing fascinated me. Yeah, this is a thing I should do, right? And obviously, so if you're solving a problem and it is reaching to masses, so that's the best thing that you can do. So that's how we started. So Right. like that is one thing I believe that this venture has started with to reaching the masses. Like you want to reach the masses. Right. Obviously, uh, as I said, we never intended to become a company. It was all about the passion, right? So Abhishek used to create the content, and I used to post. The thing is, I belong to marketing side. I used to handle all the DMs that used to come on the Instagram page. So on daily basis, 5 to 10 startups used to come, right? And they were Yeah. asking for some help, and the common problem was team building. So they were not able to find the right team. So that's why we figured out that this would be the great problem and we should work on it. And that's how it originated. Okay, so in that thing, मेरे पास एक question आ रहा है. So if someone is starting their startup, right, and they want to reach you out, so how they will reach you, and how So you can basically, help there are them in building their startup also. so as name suggests, Karo Startup. So basically, those who are planning to start and those who are budding entrepreneurs, they reach out to us, have this problem and something like that. So we have that whole ecosystem. While building the community, we got connected with lot of like-minded people who are already doing great in the ecosystem, right? And even we have been doing great also when it comes to community building. We have a great network, right? So these people came to our network, and that's how we figure out कि हाँ, these are the people who can help other startups also in the process of building when it comes to tech, when it comes to marketing, and even funding. Almost all the investors in the ecosystem, they know us, right? And they follow us. So that's how we got that, and we started helping people. And obviously, as I said, our main focus and our only product is of team building. But meanwhile, if people comes to us, we also help them. So that's the thing. Okay, so like I was asking you that अगर मेरे को कोई स्टार्टअप करना है और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए कोई बिकॉज यंगस्टर्स यू आर हेल्पिंग यंगस्टर्स राइट और आप कॉलेज इवेंट्स करवाते हैं सो अगर किसी को कोई कॉलेज एंटरप्रेन्योर है और उस कॉलेज प्रोफेशन में अभी काम कर रहा है तो उसको अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो उसकी आप कैसे हेल्प कर सकते हो So basically, क्या है कि the main thing is कि startup is, and whoever is starting, right? When we started, we used to think कि startup is such a fancy thing, and now it's that कि startup is so decentralized. Every third person is planning to do a startup, right? So I just want to suggest people कि this is not a fascinating world. कि if you're planning to start a startup just to become a CEO and like MD, right?
so this is not the world for you, this is not the right thing for you. The thing is ki बहुत hard is journey, right? And obviously if you'll start, you'll face a lot of obstacles, lot of depression and everything stuff like that. But the thing is ki हाँ, if you have figured out a problem, the thing is ki the total addressable market, that is called TAM, so that is big, and you personally have felt that ki this is the problem and I need to solve that. Then after you should come to that, and if you have that right mindset and you have that passion, you in process you will be finding good people as we did. Okay, okay, okay. You use the word TAM. Can you please help us with, like, to the listeners, what this term TAM means? Total addressable market. Let's suppose if you are planning to start a tech company just for the college student, you'll have to figure out ki how big the market is, and that is the most important part while you are planning to start a startup. Let's suppose ki if I'm planning a startup whose target market is only 10 lakh, right? So if I, and Okay. let's suppose maybe there are many players, you won't be able to cater that. If there is a market in which there are 100 million students, or maybe or 50 million or 10 million user base, at least you are covering 1%, you'll be covering a whole lot of stuff, lot of consumers and user base. So that's the important part while you are planning to start कि जिस भी मार्केट में आप शुरू करना चाहते हो तो वो मार्केट कितनी बड़ी है, and that is what every investor want to see, right? The market in which you will be operating. Let's suppose if you are Mm-hmm. acquiring only 1% or 5% or 10% of the market, you'll be the biggest leader like other players. So that's the thing. ओके, ओके। सो कोई स्टार्टअप करने से पहले अपना मार्केट रिसर्च करना चाहिए। And obviously problem is our first thing, right? You need to figure out जो प्रॉब्लम अपने खुद फेस करी, इट्स नॉट कि ठीक है ये चीज़ें हो रही है, एंड ऑन डेली बेसिस लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग टू अस आइडिया बेसिस पे ही, एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर फंडिंग. सो दैट इज ऑल बुलशिट. बट you need to figure out कि जो पर्सनली अपने प्रॉब्लम फेस की है while building community. We talk to हाँ। startups, उन्होंने बताया कि हाँ they face lot of problem in team building. That's how we figure out कि ठीक है maybe there could be 100 players, and obviously there are more than 100 players in that. But the thing is that the way in which we are trying to solve the problem, we are trying to make the process easier for a startup, and we are trying to help them to get passionate people. तो हमारा प्रोसेस अलग है, हमारी मार्केट अलग है. So that's why we are different, and I know I will be able to kill it, so for sure. Yeah, like I've seen your work, and you are like, you guys started this venture from your college, and now you're able to build a 1 million plus community by yourself. So like that's a great thing, and I really Thank you. appreciate Thank that. you. So Thank you so much. yeah, I've seen you like from your profile, and I went through your profile. I've seen that one thing. You started your journey from the Instagram page, and then you transitioned this thing into a startup. So, how Right. this, like, how this has thing happened, and what challenges you have faced basically while you transit this thing to a Right. startup? सो एज आई सेड कि कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कंपनी बने. सो एवरीथिंग Hmm. वट एवर यू डू, लेट्स सपोज someone is doing content writing, YouTube or whatever stuff. So while doing it in meanwhile process, you'll face a lot of problem कि ठीक है ये चीज़ें होती है. And obviously on daily basis we have multiple pages where combined we have 5 lakh plus followers on Instagram only. So when it comes to DM also, we are not able to handle that. For that we need to upgrade, we need to have a technology, right? So we build a website. On website also we have a great traffic, more than 1 lakh plus people visit our website on monthly basis, and there are 20 million plus content consumer we have on different social media platform. Like 2 से 3 करोड़ लोग हमारे कंटेंट को हर महीने देखते हैं. तो वहाँ से फिगर आउट कि Hmm. वी वोंट बी एबल टू कैटर दैट, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, सो दैट्स हाउ टेक कम्स इन द गेम, राइट? कि ठीक है यू वोंट बी एबल टू कैटर दोज मैसेजेस, यू नीड टू बिल्ड अ टेक्नोलॉजी. ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, जहाँ पे पीपल नीड टू कम एंड दे नीड टू फिल देयर क्वेरी कि मेरे को ये हेल्प चाहिए. सो दैट देयर शुड बी अ फुल एंड थ्रू प्रोसेस, फिर वहाँ से उनको रीच कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी कन्वर्टेड इनटू कंपनी. एंड मीन वाइल लाइक टचवुड था, काफ़ी अच्छे लोग जर्नी में जुड़े हैं, and they were ready to support. Even right now also, all these starters, investors, everyone is connected and they are supporting us whatever support we Okay. need from them. So that's the good thing. Mm-hmm. So like it is the thing, आपका मार्केट बड़ा हो रहा था और people were there जो काफ़ी ज़्यादा थे, and you were able to cater it from the Instagram page only. So you transit this thing into the particular startup. The transition happened. So what, when you started, because now you have started the company.
there you're starting the page Yeah. only. So while you started the Yeah. company, how you have started that, and what, like, I hope like there was a lot of challenges you have faced, right? So what, Yeah. some specific challenges you have faced, और जिस जो आपके challenges थे, Yeah. अगर कोई और स्टार्टअप कर रहा है वो challenges उसको भी face होंगे, so how they can cater that Yeah. challenges. So yeah, you're right. So basically, while starting with, we were in dilemma कि ठीक है, if company की need भी है कि नहीं, we are almost doing good, right? And right now also, so we are the second largest community in whole India, and people see us after your story, that type of content we create, right? तो वहाँ से वो impact था, तो we thought कि अगर company की need है भी नहीं, but we figure out that problem, वो हमने personally उसको feel करा, then we thought कि let's take a risk. Obviously if we are trying to expand and trying to reach to millions of users, so definitely we will have to ultimately convert that into company, we'll have to bring funding and scale it. So that's how we started. And obviously while starting up, so you'll be facing a lot of stock obstacle, right? So team building is one of the problem that everyone faces, हमने भी करा था, but the thing is कि network अच्छा था, without funding also we build a team of 45 plus people who were passionate and like ready to change the world. तो वहाँ से लोग अच्छे मिलते गए और साथ में जर्नी Okay. अच्छी कनेक्ट हो गई. इवन डेली बेसिस पे हमारे पास 50 से 100 लोग आते हैं उसे इसकी दे वांट टू जॉइन द टीम. बट हाँ, वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड एंड लेट्स सी हाउ इट गोes. Could you please tell me, like, if he someone wants to build a community for themselves, right? So how they start this community building thing? What advice you want to give to the youngsters जिनको अपनी community build करनी है? सो द थिंग इज कि और ये एक रियलिटी चेक भी होगा. व्हेन वी गाइस स्टार्टेड तो काफ़ी लोग थे भी नहीं, तो दैट्स वाई बीके ऑब्वियसली कंटेंट तो एक होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो पुश भी हुआ. बट द थिंग इज़ कि इन टुडेज मार्केट कंटेंट क्रिएटर्स आर इन ह्यूज नंबर, काफ़ी ज़्यादा है. बट वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी है. बट द थिंग इज़ कि इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट कम्युनिटी बनानी चाहते हो आप, तो ऑब्वियसली द कंटेंट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी कि वो अच्छा होना चाहिए. और कोई भी ऑडियंस, जिस भी ऑडियंस टाइप को आप कैटर करना चाहते हो, द थिंग इज़ कि अगर वो आपके पेज पे या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ऐप हो और चाहे वो वेबसाइट हो, आए तो उसको कुछ एजुकेटिव मिलना चाहिए जिससे उसको लगे कि हाँ ठीक है, आई एम इंक्रीजिंग माई नॉलेज इफ दे आर नॉट टेकिंग योर सर्विसेज ऑल्सो. योर कॉन्टेंट शुड बी डिफरेंट, ऑल डिफरेंट फ्रॉम everyone doing in the market. So that's how you'll grow rapidly from other people. Doesn't matter if someone has like 5 lakh or 1 million followers, if your quality content is good, you'll be able to achieve that in half of the time. So that's what we did on daily basis. But now is that we have converted into a company and it's going great, right? So we are not fully focused on that, but yeah, organically we got 1,000 to 2,000 people daily on in our community. Let's suppose we have 100 plus WhatsApp group, app, website, everywhere. We're doing great. Okay, okay. That's nice. Like, so how someone figured out कि ये quality content है और ये quality content नहीं है? Let's suppose there can be a lot of criteria for that, but the thing is कि अगर मैं भी कोई content पढ़ता हूँ, let's suppose I'm a student, right? If I'm following someone at the company's page, if I'm deriving any value or information out of it, जो कि मेरे काम की है, if that is for वो मेरे काम की है, तो that is valuable content for me. Let's suppose I'm into tech, if I'm getting fintech content, तो मेरे वो किसी काम का नहीं, I'll not follow that page. तो वो आपको market, वो audience type you'll have to figure out, वो आपको ध्यान में दे के रखना पड़ेगा कि हाँ दिस इज़ माई ऑडियंस एंड आई टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस. लेट्स सपोज कोई एडटेक कंपनी है तो कॉलेज के बच्चों के लिए कंटेंट बनाएगी, द टाइप ऑफ कंटेंट दिल भी नीडिंग कि कुछ पढ़ना लिखना जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड. सो यू कैन फिगर आउट कि कुछ वैल्यू निकलनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए, सामने वाला कुछ से कुछ सीखे, एंड दैट शुड बी यूनिक एंड गुड. सो दैट्स हाउ गुड कंटेंट क्रिएटर्स आर ग्रोइंग. इनका कंटेंट डिफरेंट होता है सबसे, द फेलो क्रिएटर्स, और वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेट्स सपोज इफ देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑन डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स. लेट्स सपोज Anand Mahindra also, Ratan Tata also. The only difference you will see कि every content creators has delivered some different content, और जिनका different है सबसे और जिनका अच्छा है, the less known fact that no one knows. Let's suppose after about Ratan Tata only, जो किसी को नहीं पता. If I'll be knowing that fact from a particular content creator, मैं उसको follow करूँगा और मैं उसको ज़्यादा importance दूंगा. तो that you should
keep in mind. That's the simple है, कोई इसमें rocket science नहीं है. So the research goes in, or the people who are there in our community, which type of content they are consuming, we have to focus on that, right? Right. Yeah, value Okay. only. Value is everywhere, so you should focus on that. Yeah, value. Okay. Okay. So Mm. like you build startups in tier 3 or tier 4 cities also, right? Yes. And when the people come from, the youngsters come from these cities tier 3 or tier 4, so they might face lot of challenges, right? So when you have worked Right. in these cities, what type of mindset you have gone through, and किस तरीके के लोग आपको मिले वहाँ पर, और क्या challenges Hmm. basically have faced? I'll come put the first one कि अगर आप at tier 3 and tier 4 cities also referred as भारत, right? कोई companies अगर उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, they referred as कि मैंने भारत के लिए प्रोडक्ट बनाया. Me and my co-founder has worked in companies, few good companies, those who have raised up to 10 million or 20 million US dollars. कि I if you are trying to build a product for tier 3 and tier 4 cities, you should belong from that place, right? Or you should have personally faced that. क्योंकि as I said कि we both guys belong to the same place, like he's from Uttar Pradesh, you गोरखपुर, आई एम फ्रॉम बिहार, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है. इवन द कंपनी इन विच वी हैव वर्क टुगेदर, लेट्स सपोज वी हैव डन इंटर्नशिप टुगेदर, जॉब टुगेदर इन एवरी कंपनी. तो हमने काफ़ी कंपनीज में काम किया ऑन ग्राउंड लेवल, the type, and even on the companies those who have raised up to 100 crores also, 200 crores also. So there was a company called Mall 91, so they guys have raised around $8 million, so he used to work in CEO's office. तो वो they were a social commerce company especially for tier 3 and tier 4 cities. तो वहाँ जब हमने लोगों से बात करी एंड वी फिगर आउट लॉट ऑफ स्टफ जो कि हमें ऑलरेडी पता था, बट वाइल डूइंग जॉब तो हमें काफ़ी और नई चीज़ें पता चली कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे फेसेस while doing online shopping, and mindset is totally same for everyone, every age group. So main challenges that they have, the main challenge for the first one is guidance. Obviously ideas अच्छा होता है but लोगों को पता नहीं कि how to start, right? Even the thing is कि Correct. even comparatively to smaller cities, the people who are into bigger cities, they are easily able to scale their product and services. The thing is कि वहाँ पे guidance कम होता है. There are lot of Correct. facilities also when it comes to funding, incubation, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे facilities होते हैं that they guys don't have access to, right? तो वहाँ पे and the thing is कि while building a startup you should have that right people in your team or mentor or something like that, जहाँ पे आपको वो guidance हर step पे मिले, from thinking of idea, as I said कि idea हो, अच्छा idea हो, तो उसका market बड़ा होना चाहिए, right? मार्केट इज बिग, तो वहाँ पे आपको हर प्रोसेस पे आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए. लेट्स सपोज व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग अ कंपनी और लीगल हेल्प में भी, तो एक एक स्टेप पे अच्छे लोग चाहिए आपको जो आपको गाइड कर सकें. और थोड़ा सा द मेन प्रॉब्लम दे फेस इज स्केलेबिलिटी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पर, लॉट ऑफ इनक्यूबेटर्स है देयर, एक्सीलेटर्स है देयर, दे हेल्प टू ग्रूम दे स्टार्टअप. वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, सो दे लैक दैट मोटिवेशन कि चलो मैं तो नहीं कर पाऊंगा. जो बड़े शहर के लिए लोग हैं वही स्टार्टअप करके सक्सेसफुल भी होते हैं. बट द थिंग इज चेंजिंग नाउ ड्यू टू शार्क टैंक एंड ऑल. तो पीपल आर गेटिंग दैट अवेयरनेस, लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ से क्या रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से लोगों को रीच करके आप हेल्प कर सकते हो. इवन नाउ गवर्नमेंट इज फुली फोकसिंग ऑन स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, जहाँ पे लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर. तो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है एंड पीपल आर नाउ एजुकेटेड, तो वो उनके लिए ईजी होता जा रहा है. तो आई कम फ्रॉम द दैट बैकग्राउंड, तो हमारे लिए भी ईजी रहा वहाँ के लोगों को समझना, वहाँ के ऑडियंस के माइंडसेट को समझना. और देयर वाज नो एनी कल्चर, कोई बैकग्राउंड नहीं था वहाँ पे, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं थे. दैट्स व्हाई आई हैड टू अनविलिंगली कम टू नोएडा और दिल्ली फॉर माई फर्दर स्टडीज़. तो हमने सोचा ठीक है पढ़ाई तो यहाँ से करी, बिल्ड करेंगे अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लिए. सो एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट एंड पीपल आर वेलकमिंग अस. कि वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं कि उनके कॉलेज में जाके उनके बच्चों को प्लेस कराना, अच्छी अच्छी कंपनीज़ को ले जाना जो हमसे कनेक्टेड हैं, कंपनी जिन्होंने 100 200 500 करोड़ रेज करा है. सो दे नेवर यूज टू गो टू दिस कॉलेजेस. जब हमने उनसे बताया कि ठीक है असली जो क्रीम है, रियल टैलेंटेड पीपल आर इन दिस सिटीज, टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज, एंड यू शुड ट्राई दैट आउट. तो हमने 5000 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट भी कराया फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स ओनली. तो क्योंकि मुझे पता है कि if I'll be able to focus, or if I'm focusing on people from Delhi NCR or Chennai, Bangalore, they have multiple options, right? तो उन्हें हमें हमारी ज़रूरत नहीं, but the people who are coming from college, they have need. So that's why we focus on that. So that's all.
Yeah, cause like I also come from tier 3 or 4 city only. You can say. So like when I go to my colleges and see like there is no companies coming for people for students who, because there is a Right. lot of talent in tier 3 and 4 cities, but just the thing is then they won't get that much opportunity as compared to 1 or 2 cities. Yeah, obviously. So that's the main problem. Even not a single company goes to the placement, right? Hmm. So everyone comes to Noida for just doing Hmm. internship, and thanks to lockdown, so now that ki work from home culture is available in few companies, right? Hmm. Like almost every companies. So वहाँ से they are getting few opportunities, but the thing is कि when it comes to full time job also, so they had to come to other cities or bigger places, bigger cities to do job or internship, like pack their bags and come here for just doing an internship. We thought कि why don't they can do from their hometown. So that's why we thought कि हम वो यहाँ नहीं आएंगे, हम कंपनीज को लेके वहाँ जाएंगे. एंड नाउ पीपल आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. अच्छी अच्छी कंपनीज हैं. Hmm. एंड एज आई सेड कि इंडिया में जो भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट, चाहे वो यूनिकॉर्न हो चाहे सोनिकॉर्न हो, everyone is connected to us and they are hiring from our platform and they are getting best candidate. Yes, yes, yes. Like the talent come from the grounds only. So that's the thing. Yeah. Right. So you like explain the thing that tier 3 और tier 4 के जो चीज़ें बिल्डअप होती हैं उसको हम भारत बोलते हैं. So I was mentioning that I was not aware about that thing. So like I learned that Yeah. one new thing from you today. क्योंकि when we used to do job, so ज़्यादा नहीं, हमने 6-7 महीने जॉब करा है एंड जस्ट टू लर्न द प्रोसेसेस कैसे काम होता है, और अच्छी अच्छी कंपनीज में करा है डायरेक्ट विद द फाउंडर्स ऑफिस या फाउंडर्स के साथ. तो वहाँ पे दे यूज्ड टू से कि दे आर बिल्डिंग भारत की दुकान और भारत का शॉप और समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ से टर्मिनोलॉजी काफ़ी पता चली, और जब लोगों से बात करा हमने, और एज यू हैव ऑलरेडी Hmm. सीन की वी हैव onboarded more than 5 to 10,000 शॉपकीपर्स, जहाँ उनसे हम पहली बात Hmm. कर रहे थे एंड दे वर नॉट अवेयर कि कंपनी क्या करती है, कैसी है. वी यूज टू एजुकेट देम फर्स्ट, उनको समझाना है. एंड दे यूज टू लिसन दोज पीपल जो उनके अपने लोग हैं. लेट्स सपोज कि आई कम फ्रॉम द सेम हाँ. बैकग्राउंड, तो मैं उनको उनकी भाषा ही में बात करता था, द टाइप ऑफ Correct, बैकग्राउंड correct. दे हैव. एंड आई यूज टू टेल देम द इम्पोर्टेंस कि भाई आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी कंपनी है क्या डिफरेंट कर रही है. देयर विजन वॉज Hmm. ग्रेट. Even the founder was a serial entrepreneur. They have invested in multiple companies and they have built more than 10 plus companies and successful exit he got. तो वहाँ से हमने सीखा कि नहीं, और वो समझते थे कि हाँ ठीक है, when is calling from the company, so he is our people, like हमारे बीच से है, क्योंकि he can speak our languages. वहाँ से ट्रस्ट भी अच्छा बिल्ड होता था. We used to visit villages, वहाँ पे उनको ऑनबोर्ड करना. So that job was exciting. Meanwhile in process करो startup page was going good. तो वहाँ से वी गॉट ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन स्टार्टिंग. तो फिर हमने कंपनी छोड़ी एंड फुल टाइम हमने फिर यहाँ से स्टार्ट करा. Okay, एंड so व्हेन वी that वर thing. लिविंग द ऑफिस. क्या Continue, हुआ है. continue, continue. हाँ, व्हेन वी वर लिविंग द ऑफिस, तो दे वर सेइंग कि हाँ ठीक है मत जाओ, तो प्लीज़ कंटिन्यू इन दैट. हमने सोचा नहीं, ठीक है, वी हैव यू, अभी आपको कोई भी ज़रूरत हो वी कैन हेल्प. we we are here to guide other people, although with our age, so we don't have that much of experience when it comes to age, but we started from when we were 17-18. तो मोटा मोटी 7-8 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही हो गया, तो वहाँ से सीखे. Ah, okay. What really like inspired you to turn like leave the job and start with the this venture? Because like when you एज were आई in सेड the कि job you might be getting a like महीने की फर्स्ट डेट को you were getting the payment, like so like what inspired you to leave this job and start with the journey? when it comes to me personally, so आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है, Hmm. क्यों करना है, क्योंकि आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट द अपॉर्चुनिटीज़. कि एज आई सेड कि जो मेरा पार्टनर है, हमने 3 इंटर्नशिप साथ में की है, जॉब भी. वो जहाँ जाता, उसने कहा कि चलो कंपनी अच्छी, आ जा तू भी आ जा, देखते हैं क्या कर Hmm. सकते हैं साथ में. फिर मैं इंटर्नशिप साथ में करी, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी. मैं ऐसा बच्चा था कि आई वॉज लाइक स्पॉइल्ड किड इन द कॉलेज. स्कूल में भी मैं काफ़ी बिगड़ा हुआ बच्चा था, मेरे को कोई मतलब नहीं. पार्टीज एवरीथिंग, एवरी स्टफ लाइक दैट आई यूज टू डू, तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं था. बट द थिंग इज कि आई वाज क्यूरियस. तो व्हेन दिस गाय यूज टू डू इवेंट, अभिषेक एंड मधुमिता एंड ऑल, तो मैं वहाँ जाता था मे बी बस घूमने के लिए. तो ना
आई स्टार्टेड लिसनिंग टू डेलीगेट्स एंड ऑल, तो वहाँ से इंटरेस्ट लगा कि हाँ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे को कुछ अलग भी करना है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज सॉल्विंग मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम, लाखों लोगों की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट यू शुड डू। और वहाँ से इंटरेस्ट और जगने लगा। फिर साथ में शुरुआत हुई, अभिषेक ने करा, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट, ही इज़ द मैन बिहाइंड पेज एंड ऑल एवरी स्टफ कंटेंट साइड, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिन एवरी आई एम बिन ऑन टू मार्केटिंग साइड ऑलवेज स्टार्टिंग से, कि मेरे को बस बोलना पसंद है, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्किल्स, बट मेरे को लोगों को कन्विंस करना पसंद है, when it comes to investor, when it comes to client, when it comes to every step, तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद था। तो देन आई ठीक है, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, वहाँ से हमने स्टार्ट करा वाइल वी आर डूइंग द जॉब ऑल्सो। फिर चीज़ें चलने लगी अच्छी, ग्रोथ रैपिडली होने लगी, ऑन डेली बेसिस वी यूज्ड टू गेट 10,000 20,000 पीपल, एंड मनी वाज नॉट द इंटेंशन, क्योंकि जैसा मैंने सोचा कि बोला कि आई वाज डूइंग जॉब इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, एंड आई वाज गेटिंग अ डिसेंट मनी, जो कि एक कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत डिसेंट होता है, लाइक 45 to 50 के आई यूज दे वर ऑफरिंग, एंड दोनों लोग अच्छा कमा रहे थे, बट थॉट कि ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, राइट? तो 5 साल बाद भी लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड दैट प्रॉब्लम वी फिगर आउट आर सेल्फ। तो हमने सोचा ठीक है, वी नो कि वो प्रोसेस हो चुका है, 2 साल 3 साल हमने कम्युनिटी भी चलाई है, तो वी नो हाउ टू बिल्ड दिस, और हम लोग करेंगे, और थिंग्स आर गोइंग गुड एज ऑफ नाउ। ऐसे फिर हमने वहाँ से शुरुआत की, एंड ऑल्सो सो पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, स्टार्टिंग में तो नहीं, अभी हैं तो जॉब कर लेते सही रहता, एंड ऑल दैट सब। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, शांति शांति शांति, अब जाके उन्हें लगता है कि चलो Okay. ठीक है, अच्छा कर रहा होगा, जब लोगों से सुनते हैं कि, क्योंकि इवन इन माई होम टाउन और इवन अभिषेक होम टाउन, एवरी वन नोज अस, चाहे वो इंस्टाग्राम से देखा हो, चाहे यूट्यूब से देखा हो, चाहे लिंक्डइन से देखा हो, तो सभी कहीं ना कहीं हाँ. हमें जानते हैं कि भाई आपका देखा था हमने, आपका प्लेटफॉर्म देखा था, आपकी वेबसाइट दिखी थी, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा काम कर रहा है, लोग भी आके बोलते हैं, तो हाँ. ठीक है, नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव। Right. So, like, parent support is very important when something we want to start, right? But abhi ke हाँ parents हाँ ka mindset has changed because they are seeing the things is coming up and the people are changing. Like the generation is changing, so mindset is also changing as the things is going very fast in the pace of AI, Chat GPT, and everything, right? So but still हाँ। पेरेंट्स को एक समझाना इज नॉट वेरी इजी, सो हाउ डू यू फाइंड इट कि अपने पेरेंट्स को कोई कैसे समझाए कि लाइक हाउ डू यू फाइंड इट द बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड योर जर्नी? तो पहले तो मुश्किल था, यू सेट कि अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेट्स सपोज शार्क टैंक आ गया है, तो गांव गांव में जैसे भले किसी को फंडिंग मिले ना मिले डजेंट मैटर, बट द थिंग इज कि इफ दे आर सीइंग दैट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, राइट, वेयर दे यूज्ड टू सी साउथ बहु सीरियल्स एंड ऑल, तो माइंडसेट चेंज होता है। इवन आई या. कम फ्रॉम द बैकग्राउंड जहाँ पे काफ़ी वैसी सोचती है कि हाँ ठीक है बिजनेस ही करना है, इवन मेरे घर में एवरी वन इज लाइक डूइंग गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ से निकल के स्टार्टअप करना है, तो वहाँ कोई कल्चर नहीं था। आई वाज द फर्स्ट गाय हु ट्राई टू स्टार्ट दिस, और आई डोंट थिंक कि मेरे पूरे शहर में या पूरे सिटी में कोई ऐसा कुछ कर रहा होगा, राइट? मे बी आई डोंट नो समवन फेमस या ओके. समवन डूइंग दिस। तो वहाँ से रहता है कि 1 लाख में अगर ये बच्चा कुछ अलग कर रहा है तो दैट इज़ नॉट राइट। बट समझाते समझाते कुछ जिद भी था, लेट्स सपोज कि, एंड आई एम मेंशनिंग अगेन कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इंसिस्टिंग फॉर द पॉडकास्ट, बट द थिंग इज कि ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, वट एवर आई हैव लर्न आई कैन शेयर विथ यू। और लोग भी नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क अच्छे बनिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टार्टअप सब जानते हैं, तो रिजिड रहे कि मेरे को करना है, तो 1 साल 6 महीने इग्नोर करा घर वालों ने भी, जब देखा कि चीज़ें अच्छी हो रही है, बेटा फेमस भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो ठीक है, सो करने देते हैं, या. वैसे भी जॉब में वही चीज़ें करती, तो या दैट्स हाउ देयर पेरेंट्स लुक माइंडसेट चेंज्ड। फॉर correct like so once like to the young people or the youngster who are listening to this, we'll say that if you show the results to your parents they will definitely got insisted what you do, right? द थिंग इज Well कि आप said. फैसिनेटिंग नहीं है, किसी को देख के आप शुरू मत करो कि जैसे सामने वाला बंदा स्टार्टअप कर रहा है, क्योंकि आई थिंक कि ये मेरा इंटरेस्ट है। अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं किसी को देख के स्टार्ट नहीं करता। इफ आई एम Correct. पैशनेट इन टू जॉब स्टफ, मैं स्टार्टअप से ज़्यादा कमा सकता हूँ, पीपल आर डूइंग दैट। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुंदर पिचाई, मे बी ही कैन बी अ वन इन मिलियंस, बट ही इज राइट, सो ही कैन, Yeah. he is earning like $300 million so as a salary, right? Not a any startup founder can dream of। तो वो एग्जाम्पल्स भी हैं,
बट द थिंग इज कि थोड़ा सा रिजिड रहो, जैसे आपने बोला कि रिजल्ट दिखाओ और कुछ देख के मत कूदो। जब पर्सनली किसी चीज़ को फेस करो, एमवीपी बनाओ, एटलीस्ट ट्राई टू रीच टू 1000 कस्टमर फर्स्ट। अगर आपके 1000 कस्टमर आ गए देन आफ्टर, तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू जज योर स्टार्टअप की ठीक है, 1000 बंदों ने अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ किया तो वी आर गुड टू गो। बाकी हाँ, मीनवाइल लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस अपार्ट फ्रॉम जॉब, क्योंकि everyone's family background is totally different, like the type of environment that we have, the situation। तो साथ साथ में देख के कंडीशन भी मे बी यू कैन मैनेज इट पार्ट टाइम, जब लगे कि चीज़ें अब अच्छी जा रही है यू कैन ड्रॉ योर सैलरी, देन आफ्टर डू दैट सब। बाकी तो ठीक है। Correct, correct. So, this हाँ this सर। could be the last question, I think. So, I want you to let youngsters know, like, if they want to start something. Well, let's say they want to start up, right? So, firstly, what five things or what three things they need to focus upon? कि वो तो करना ही करना है. अगर उसको नहीं करेंगे, they will lack into something. एक जो सबसे कॉमन चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने सीखी है, द टीम यू बिल्ड इज़ द कंपनी यू बिल्ड। सो दैट इज़ द मोटिव ऑफ आर कंपनी, कि आप जॉब करो, बिजनेस Okay. करो, स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, द टाइप ऑफ पीपल दैट यू हैव इन योर कम्युनिटी, इन योर फैमिली, फ्रेंड सर्किल, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। और आपका नेटवर्क, टीम अच्छी बनाओ, कम्युनिटी अच्छी बनाओ, जैसे हमने बोला कि आपको लोग अच्छे मिल जाएंगे, राइट। तो फोकस करो कि आपका जो नेटवर्क है उसको कितना इंक्रीज करें। जितने भी सीनियर लोग हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, उनसे सीखो, उनसे दोस्ती करो। आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं करना। जो लोग सक्सेसफुल नहीं रहे हैं या फिर जिन्होंने मतलब थोड़ा सा फेलियर उनको देखना पड़ा, उन्होंने अपनी गलती से क्या सीखा, ये सारी चीज़ आप फिगर आउट करोगे। और हाँ, नेटवर्क जो नेटवर्क, जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे, जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाओगे, उतना सीखने को आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सो वो चीज़ें होनी चाहिए। और हमेशा उनके साथ रहो जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, राइट। सो मैं वही करता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में भी था तो हमेशा यूज टू रूम विद सीनियर्स, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। तो वहाँ से नेटवर्क बना एंड दे फिगर आउट कि चलो ठीक है, दिस गाइस इज डिफरेंट, तो साथ में करते हैं कुछ। और जितने दोस्त हैं, एंड few people are doing job and they are earning more than me as of now, but the thing is कि they are happy, क्योंकि इनको वो करना था। आपको ये करना है तो try to network with people, so that is going to help you। and I'll tell you, अभी हमारे पास या मेरे पास पर्सनली लोगों के पास अच्छे अच्छे लोग हैं, whatever I'll be needing while building my startup, when it comes to funding, tech, marketing, कुछ भी हो, so they are ready to support। अब वो करते भी हैं। Yeah, okay, okay. So, one more thing, like this thing also coming into my mind, I might ask you, when you started, like you have said that it's almost 6 to 7 years you are in this journey, in this venture. So, what challenges you have faced in this journey? Yeah, whole it's been maybe 4 to 5 years, right? क्योंकि कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। दिस वेंचर इज अराउंड 2 years old, क्योंकि कम्युनिटी चलती थी तो दैट टाइम देयर वाज नो इंटेंट टू बिकम अ कंपनी। तो कभी कभी, और वी गाइस स्टार्टेड टू अर्ली, राइट। तो कभी कभी दुख भी होता है, क्योंकि द टाइम वी स्टार्टेड तो ऑल माई फ्रेंड्स वर डूइंग पार्टिंग एंड ऑल अदर स्टफ, राइट। घूमना फिरना एंड जो भी चीज़ें होती है कॉलेज, तो कभी कभी आई मिस, राइट। तो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे, बट द थिंग इज़ कि काम करते गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया, चीज़ें सीखने को मिली। द थिंग इज़ कि एज ए सेट की नेटवर्क, द थिंग इज़ कि आई एम सिटिंग विद द वीपी ऑफ पेटीएम, आई एम सिटिंग विद द वीपी ऑफ जोमेटो, या फाउंडर ऑफ कंपनी हु हैव रेज $100 million, $500 million। तो वो चीज़ें पहले मैं सोचता था, बट अब वो मैं करता हूँ कि चलो ठीक है, मेरे को इस कंपनी के फाउंडर से बात करनी है, आई कैन डायरेक्टली सिट विद देम, टॉक विद देम। तो एक मोटिवेशन आता है, लर्निंग तो आती ही आती है। मैं बस करता हूँ कि जो भी मेरे से समझदार होते हैं, जो भी मेरे से अच्छे लोग होते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और बस सीखता हूँ। ऑब्स्टेकल यही रहा कि ठीक है, बहुत सारी दिक्कत थी, क्योंकि मैंने बोला कि बैकग्राउंड भी काफ़ी डिपेंड करता है। बिजनेस का हमारे यहाँ बी भी नहीं था, तो थोड़ा सा लोगों से भी सुनना पड़ा, घर वालों से अभी तक सुनता हूँ, फैमिली वाले, रिश्तेदार तो अभी तक बोलते हैं कि पता नहीं, सबसे जो गया गुजरा बच्चा आपके घर में यही है। बट द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि आई कैन डू समथिंग गुड, तो मैं लगा हुआ हूँ। बट हाँ, घर वाले अब सपोर्टिव हैं,
तो कभी भी लगता है कि चलो ठीक है, घर वालों के अलावा खिलाफ भी आप ये चीज़ें कर रहे हो, बट यू नो कि यू आर डूइंग दिस फॉर देम, फॉर योर सेल्फ, कि आगे के generations को दिक्कत ना हो. And obviously the outcome is great when it comes to money also, when it comes to fame also. But the thing is कि उसके लिए आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए. वो चीज़ें प्रोसेस में आती हैं. चाहे आपको अच्छी गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, और नॉट फ्रॉम द फंडिंग ऑब्वियसली, फ्रॉम द रेवेन्यू दैट यू जनरेट. क्योंकि कोई भी स्टार्टअप क्या है कि थोड़ा सा वर्ड फैसिनेटिंग हो गया, यूनिकॉर्न, सोनिकॉर्न, जो भी इतने टर्मिनोलॉजीज हैं. बट द one thing that is common in every startup, that is value creation and revenue generation. लोग पैसा बना रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं. So that's why they started the startup, right? They are working 18 hours, 20 hours, and they deserve that. कि आप मेहनत करो, आउटकम भी आपको ऐसा ही मिलेगा. So that is the intent, कि काम करते जाएं, सीखते जाएं. So right now I'm 24, तो मे बी 4-5 साल 6 साल बाद I'll be in the position कि ठीक है, मे बी आई कैन अर्न वेरी मच वेल, एंड वो लोग भी जाने, लाखों लोग जाने, तो दैट इज एनफ. और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए. वट एवर यू नीड टू लिव योर लिवलीहुड, जस्ट डू कीप डूइंग द ग्रेट वर्क. लोग जाने के, हाँ ठीक है, देयर वाज समवन हु डिड अ ग्रेट जॉब, who solved this problem, who built this app, who built this startup. That's the only intent we guys have. और बाकी तो पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो. It's not only thing to start the startup. सपोज आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, तो मैं अभी किसी को बताऊंगी तो उनको नहीं समझ आएगा, मेरे रिलेटिव्स को नहीं समझ आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दे डोंट नो द फ्यूचर, माइट बी राइट. सो दैट इज समथिंग एवरी वन फेस लाइक, राइट. वो बहुत बुरा पॉइंट होता है जो सबको फेस करना पड़ता है. Right. So And that thing you can use for motivation also, right? आपके घर वाले कुछ भी बोलो, तो that doesn't matter, अच्छे के लिए बोलें या बुरे के लिए बोलें, तो they want your happiness, that's it. कि आप सेटल हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, you settle in your life, you are doing whatever you are doing doesn't matter to them. But the thing is कि people from outside are saying something to you, you should always use that as a motivation कि हाँ ठीक है भाई, तू मेरे को बुरा बोल, I'll be doing 10 times better. तो आप देखो मेरे को कि मैं क्या करता हूँ, सुनते रहो, जस्ट इग्नोर दैट सब. हमें भी लगता है, बट द थिंग इज कि थोड़ा ये जर्नी है, सो दैट इज जो सो फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी. बट हाँ, एज आई सेड कि आपको अच्छे लोग चाहिए इन द प्रोसेस, इमोशनली, मेंटली. यू विल बी नीडिंग दैट पीपल जो आपको सपोर्ट करें. अदरवाइज इन दिस पार्ट यू विल बी फाइंडिंग योर सेल्फ लोनली, दैट एवरी एंटरप्रेन्योर डज. तो काफ़ी बीच में छोड़ भी देते हैं कि ठीक है, दैट इज़ नॉट माई स्टेप, चलो ठीक है, लेट्स डू समथिंग एल्स. बट जो लास्ट तक टिका रहता है, while building startup, while facing all the problem, so he'll be successful. Doesn't matter whatever stuff he is doing. Let's suppose you are doing podcast, so I also do podcast with all the founders, even physically, but all the we have done more than 300 plus podcast plus with almost every founder in the country. तो हमने करा है. तो द थिंग इज कि अगर आपने शुरू करा, लेट्स सपोज आपने 100 किए, 200 किए, 500 किए, अगर आपको बोलने भी नहीं आता, लेट्स सपोज आप अच्छा नहीं करो, तो वो चीज़ें मीनवाइल प्रोसेस 1 करोगे, 2 करोगे, 5 करोगे, अपने आप वो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ऑडियंस भी आपके पास. बट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते रहो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, एवरीथिंग दैट यू कैरीज, राइट, योर सेल्फ. तो आप उसमें सक्सेसफुल हो गए हो गए. जस्ट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. वन थिंग ना, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग, तो ट्राई टू स्टार्ट अर्ली. क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करते हो, एंड लेट्स सपोज इफ़ यू आर फेल्ड इन द सेंस कि नो वन फेल्स, राइट, दिस इज़ ऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो यू विल नो द प्रोसेस कि कंपनी कैसे चलती है. अगर आप चला भी नहीं पाए हो तो मीन वाइल इफ़ यू विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 5 years और 10 years, तो आपको सारी प्रोसेस पता है, टीम कैसे हायर करनी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, पहले रेवेन्यू कैसे लाना है, फंडिंग कैसे लानी है. अगर आप सीखोगे ना तो आपके पास रिस्क लेना है. लेट्स सपोज कि समवन स्टार्टिंग इन 20, 21, 22, 23, अगर वो 3-4 साल करके अगर नहीं भी चला पाते स्टार्टअप को, दे कैन डू जॉब. 5 साल 10 साल बाद दे कैन स्टार्ट अगेन, और 6 महीने में वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगे जो बंदा 4 साल में सीख के करेगा. तो स्टार्ट अर्ली, थोड़ा ये बेनिफिट होता है दैट वी गाइस हैव, कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट का टाइम होता है. ये प्रोडक्ट नहीं चला तो ठीक है, यू कैन ट्राई आउट समथिंग एल्स मे बी. सो दैट कैन बी रीजन, दैट्स इट. बाकी तो आप करते रहो, कोई भी काम करोगे अच्छे से तो यू विल सक्सीड इन दैट. सो दैट्स द सिंपल फॉर्मूला. So one need to be consistent, and they can also should start early.
so that अगर कोई challenges बीच में आते हैं, you can figure out the things also. For So sure. like on that note, I want to ask you like how do you like the podcast and any suggestion you want to give me that we need to implement for the next episode. First of all, thank you so much for calling. And Yeah. this creator economy, to be honest, I'm also doing podcast, and this is the next big thing. Although we have done more than 300 plus podcasts, so creators economy is on boom. So this market will be of $100 billion in next 5 years, right? And it's around 30 to $40 billion. So abhi there is lot of space, and not just for the money part, not for the fame part. You should not keep that in mind. तो आप बस करते रहो, and let's suppose you have started this. आई होप कि आपने किसी और को देख के स्टार्ट नहीं किया हो. यू हैव दैट पैशन, राइट? कि हाँ ठीक है, आई लव टू टॉक टू पीपल, मेरे को जानना है स्टार्टअप कैसे होता है. सो दैट आई पर्सनली फील कि मेरे को वो चीज़ें जाननी होती है. सो दैट्स वाई वी स्टार्टेड. तो वो चीज़ें रखो, और चीज़ें देयर इज नथिंग परफेक्ट. लाइक आप कितना भी अच्छा करो, कुछ ना कुछ रहती है. तो चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी. यू विल फिगर आउट कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें और होनी चाहिए. तो करते करते अपने आप चीज़ें अच्छी होती जाएगी. सो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट यू. बाकी तो हमने भी ऐसे शुरुआत करा. द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग ना, एक वर्ड में इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल होता है कि आदमी सोच नहीं सकता. बट आई कैन फ्लुएंटली टॉक इन इंग्लिश फॉर कंटिन्यूसली व्हाट यू वांट, राइट? तो अभी वो चीज़ें अपने आप आ जाती है लोगों से बात करके. आप चाहे हिंदी बोलो, इंग्लिश बुला लो, चाहे लोकल लैंग्वेज बुला लो. तो आई कैन टॉक टू पीपल फॉर लाइक कंटिन्यूस मिनी आर. तो वो चीज़ें सीख जाते हैं लोग इन प्रोसेस, राइट? तो वो चीज़ें What I कंटिन्यू think रखो, is दैट्स like इट. people don't start. People face with the thing that they don't start the things until because when they start they learn so many things. And जब start करेंगे we'll know that this is the consequences we're gonna face. This is a pros and this is a cons. But when we don't start, that's a thing many people are facing. वो सोचते रह जाते basically, करते नहीं, execution नहीं हो पाता. So that's the main issue. ऑब्वियसली, और चीज़ें आप करोगे तो अपने आप चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी. बस उसको आप करते रहो अच्छे से. एज ए जो ऑलरेडी मेंशन कि कंसिस्टेंसी के साथ करो, और हर बार आपको लगेगा ठीक है मैं और बेहतर कर सकती हूँ. द क्वेश्चन शुड बी गुड ऑल्सो, राइट? कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा. हमारे भी पसीने छूटते हैं जब हम बड़े फाउंडर के साथ जाते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि क्या पूछें, कुछ गलत ना हो जाए. बट वो लोग भी अच्छे होते हैं, तो दे मेक अस कंफर्टेबल कि ठीक है आराम से. तो अपने आप चीज़ें हो जाती है. Yeah, ये कोई that is a one बहुत good बड़ी बात. thing you mentioned that जब हम किसी अपने बड़े से बात करते हैं we think that yeah that is person who knows many thing and I might not know anything, so that's why we might lose confidence also. So but it is not like राइट. that. Because I also talk to many people, and this thing I learned that once we start talking to them, no, they will understand हाँ. like this is a person who is starting, so they give that space to us. So that's the thing, हाँ. right? And you should learn from the people, क्योंकि when we started we used to reach out to different people for guidance कि mentorship कि सर कुछ आप 5 मिनट टाइम दे दो, this is what we are building. तो some people texted, reply on LinkedIn, on Instagram, other stuff, right? So जब कोई और भी स्टार्ट करता तो दैट थिंग कम्स इन माई माइंड कि व्हेन वी स्टार्टेड कुछ पता नहीं था कि ये बिल्ड करना है तो ये करना है. तो लोगों से बात करी, 100 में से भले 2 रिप्लाई आते थे, बट 2 लोग अभी भी कनेक्टेड है, और दे आर द बिग नेम्स इन द कंट्री. और 98 ने मना किया तो दैट डजंट मैटर, वो 2 लोग साथ में हैं. तो जब हमने भी कुछ करा है, लेट्स सपोज कुछ भी सीखा, इफ आई कैन शेयर इट विथ यू और एनीवन एल्स, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. तो वो मेरा हमेशा इंटेंट रहता है कि कुछ भी मैं कहीं जाता हूँ तो अगर मैं किसी को बता पाऊँ, कुछ वैल्यू एडिशन हो उसकी लाइफ में, so that will the best part. Okay, so thank you so much. On that note, I'll love to end this podcast, and like it's nice talking to you. Thank you so much. Thank you for doing this. Thank you so much for sticking with us all the way to the end of the latest episode of Hanshika Jain Show. We appreciate your support and hope you will join us for the next episode. This is Hanshika Jain signing off. We'll catch you next time.